afternoon. Are you getting the view? Hello? Yes, ma'am. Okay. So we will start today the left part of reproduction. Okay? In previous class, we have discussed asexual mode of reproduction. Is that clear? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Now come to the sexual mode of reproduction. Sexual reproduction. First feature will be what? What difference I have told? In asexual, it was fission. In sexual, it was fusion. So for fusion, first what will happen? Just listen. See this flow chart. What is the chromosome number in human being? It is 46. Is that clear? And just see. First process is, लिख लेना, gametogenesis. First feature is gametogenesis. It consists two process. ठीक है? Two steps. First, spermatogenesis. लिख दो. Spermatogenesis. And second is oogenesis. ठीक है? Gametogenesis, that is formation of gametes. ठीक है? Spermatogenesis, that is formation of sperm. लिख लो. Formation of sperm. Here formation of ovum. Am I clear? Is that process is clear to you? Now, when gametes are formed, then fertilization. Fertilization. After fertilization, what is formed? Zygote. ठीक है? These are the three steps. You write it down. Gametogenesis, that is formation of two different gametes. First, spermatogenesis, forming sperm. oogenesis, forming ovum. ठीक है? और ये gametes हमेशा it is denoted by N. ठीक है? N is what? Number of chromosome. This shows what? Haploidic condition. Single set of chromosome. Then, when two gametes form, this will fuse. Fusion of nuclei of male and female gametes. ये क्या हो गया? Fertilization. Fusion. After fusion, what is formed? Zygote. It is denoted by 2N. That is diploid. ठीक है? This is haploid and this is diploid. अब just see here. यहाँ भी सेल डिवीजन का स्टेप्स है. फर्स्ट है मियोसिस और मियोसिस 1 and 2 होता है. ठीक है? 1, I have told earlier, it is reductional division. Means chromosome number and chromosome number varies
फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज. ठीक है. सो meiosis 1 इज व्हाट? रिडक्शनल डिवीजन. क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ. अब देखो अकॉर्डिंग टू meiosis 1 क्या होगा? इट इज 23 and 23. Got it? Is that clear? Yes, ma'am. हाँ, both are haploid. अभी बताया ना बेटा कि गैमेट्स क्या होता है? हमेशा हैप्लॉइड होता है. हैप्लॉइड मीन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. तो आउट ऑफ 46 23 क्या हो गया? सिंगल सेट. और ये इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n. n इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है. जैसे दो गैमेट्स फॉर्म हुआ, ये हो गया meiosis 1. meiosis 2 होता है, इट गोज लाइक माइटोसिस. मतलब क्रोमोसोम नंबर रिमेनिंग सेम. सेम क्या था? 46 था. तो ये क्रोमोसोम नंबर जो रिड्यूस, हाँ बोलो, एनी प्रॉब्लम यू हैव? ये क्रोमोसोम नंबर जो meiosis 1 में रिड्यूस हुआ था, अकॉर्डिंग टू meiosis 2 क्या होगा? इट विल रिमेन द सेम. व्हाट विल बी द सेम? 46. तो when two gametes form, what is left? Fertilization, fusion. So it will regaining again 46. ठीक है. And this 46 will be denoted by 2n, diploid. समझ में आया? If the question asks for 3 marks, define sexual mode of reproduction with its significance. Write down the question for 3 marks. Write down. Define the term sexual reproduction with its significance. Am I clear? तो क्या करोगे? You will make this flow chart. Don't write anything. Just for first part of the question, you will make this flow chart, and then with para start, you will write its significance. What you will write in significance? It is the most important attribute for anyone's life. Anyone's. या वो lower organism हो या higher organism. Is that clear? So it is an important attribute for everyone's life just to maintain the number of species, or to maintain from one generation to another with its continuity. ठीक है. कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, किस चीज की कंटिन्यूटी? ये जो चार्ट हमने बनाया और जो स्पीसीज टर्म है, और ये दैट इज हैज टू बी मेंटेन. तो ये इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉर द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इट इज मस्ट टू मेंटेन द generation to generation. Am I clear? One question is clear to you for marks 3. Now come to the next part. Next you will write, just see, because zygote has been formed, so start. और ये जायगोट क्या है? इट विल बी, हम कह सकते हैं, इट इज द फ्यूचर, इट इज द फ्यूचर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. इस जायगोट को फर्दर डेवलप करना है. फर्दर इसमें क्लीवेज होगा, मीन्स नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज. एंड हाउ इट विल बी इंक्रीजेज? थ्रू सेल डिवीजन प्रोसेस. तो जस्ट सी,
दिस इज जायगॉट. ये क्या है? टू सेल्ड स्टेज. इज दैट क्लियर? Unmute yourself and answer me. Yes, ma'am. Okay. So this zygote अभी हमने लिखा था ना, ये zygote क्या है? Diploidy. 2n. 2n means Tutor organism. yeah, two celled stage. Maybe a question of MCQ. अगर 4 options रहे तो क्या लिखोगे? Two celled stage. ठीक है? And now यहाँ पे लिख लो cleavage start. Cleavage starts. ठीक है? मीन्स सेल डिवीजन. कैसा सेल डिवीजन? माइटोसिस. ठीक है? सोमैटिक डिवीजन. व्हेन क्लीवेज स्टार्ट्स क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा. ये जस्ट मेक द रफ डायग्राम. दिस विल बी द नंबर ऑफ सेल्स. यहाँ देखा तुमने 2 सेल्ड स्टेज था. थ्रू cleavage, through mitosis, through cell division, that has been increased in this number 2 to 4 to 8 like that. Now cell division is on, so just see this type of division of cells. ठीक है? इस स्टेज को कहा गया मॉरूला. ठीक है? Here you see number of cells has been increased with one space. ठीक है? और इस स्पेस को, ये कंडीशन है ब्लास्टुला. लिख लेना. The space ब्लास्टोसेल. ठीक है? और ये जो इंडिविजुअल सेल्स है ब्लास्टुला का, ये है ब्लास्टोमियर. ब्लास्टोमियर. Is it clear up to this extent? Is it all clear to you? Yes, ma'am. Now, because cleavage is on, so after blastula, and this is the stage, you will write here, implanted in uterus. ठीक है? If the question for MCQ is asked, 4 options will be there. Which stage? Fertilized egg. I am asking to you, mind it. Carefully सुनोगे. If the question regarding to blastula is asked, 4 options will be there. First, fertilized egg. Second, morula. Third, embryo. And fourth, blastula. What will be? Out of 4 options, what will be the right answer? Which stage will be implanted during cleavage process? What will be the answer? Which stage? I have written here. थोड़ा अनम्यूट करके आंसर भी बोला करो. It is the blastula stage. समझ में आया? Yes, ma'am. तो अब देखो, when it is implanted in the uterus, for what purpose is what? For further growth and development. ठीक है? तो when this blastula will be implanted in the uterus, so certainly uterus should be prepared to receive it. Prepare का मतलब क्या हुआ? उसको एकोमोडेशन के लिए स्पेस चाहिए. ठीक है? नाउ सी, ये यूट्रस का जो स्पेस फॉर्म होगा फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टुला. अब यहाँ पे देखो, वन हार्मोन इज वर्किंग ओवर हियर.
वो हार्मोन का नाम है, यहाँ लिख लेना, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इसको क्या कहते हैं? ऑन इट्स फंक्शन, हाँ, प्रेगनेंसी हार्मोन, राइट। ठीक है, व्हाट इट विल डू, it will prepare the uterus for accommodation of the blastula and the further stage for growth till growth. ठीक है, and this hormone will do what? It increases number of cells and number of glands, ठीक है, for its accommodation. You will write it. It's very important part. Is that clear? Now this will be further grow into what? ऐसा क्या है? एम्ब्रायो, गैस्ट्रुला, हाँ, गैस्ट्रुला भी आएगा, लिख लेना। ब्लास्टुला के बाद नेक्स्ट आ गया गैस्ट्रुला। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, ये थोड़ा ओवल शेप का होता है, एंड विथ गैस्ट्रोसेल, ठीक है, गैस्ट्रोमियर। इज दैट क्लियर? नाउ yes, ma'am. now this will be converted into embryo. ये जो शेप देख रहे हो, बीन शेप, comma shape, it will be embryo. Still the cell division is on, cleavage is on, so it will now convert into what? Fetus. अब देखो fetus का structure, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना fetus. Is it visible? Yes, ma'am. ओके, तो ये स्ट्रक्चर बना लोगे, रफ हैंड डायग्राम, इवन यू कैन मेक इन द एग्जाम ऑल्सो। इज दैट क्लियर? एंड व्हेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, अब बताते हैं इस कंप्लीट करने के बाद कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम इस दिस एरिया विल बी आस्क्ड, एंड इट मे बी फॉर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स। तो ये हो गया फिटस, और ये जो राइट फ्रॉम हियर अप टू हियर in human being, it takes 9 months plus minus 15 days, ठीक है, एंड इसको कहते हैं पीरियड ऑफ जेस्टेशन, लिख लेना, पीरियड ऑफ जेस्टेशन। व्हाट इज जेस्टेशन? राइट फ्रॉम जाइगोट स्टेज up to fetus stage. Am I clear? This is the period Yes, ma'am. of Yes, no, gestation. ma'am. Okay. So this is period of gestation and it varies from species to species. Human में हम लोग बात कर रहे हैं, it is 9 months plus minus 10 to 15 days. Then after spending that time, that moment, which step will come? Parturition, means that is birth. लिखते जाओगे वैसे ही, it will be gestation के बाद क्या आएगा? Parturition means birth, ठीक है, और इस स्टेज में जैसे हमने इस हार्मोन का नाम लिया ना, अब क्या होगा, ड्यूरिंग दिस टाइम एग्जैक्टली वन हार्मोन नेम ऑक्सीटोसिन एंड, लिख लेना, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन। दिस ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इफ यू वांट टू राइट, अदरवाइज इन दोनों का नाम लिख लेना। इट इज द हार्मोन, दीज आर हार्मोन, ठीक है। तो ये कब रिलीज होगा? एट द टाइम ऑफ पार्टुरेशन।
and this oxytocin and relaxin, it will do what? First listen. Relaxation of pelvic. Not pelvic, pelvic. PELVIC. Pelvic कहते हैं the bone through which two legs attached. Waist bone जिसको कहोगे. Pelvic girdle and pectoral. Pectoral होता है यहाँ, through which two hands attached. ठीक है? तो it will do what? Relaxation of the pelvic girdle and relaxation and contraction of uterine wall. You will write, if you don't recall, you will write these two functions. Relaxation and contraction of pelvic girdle and uterine wall. Is that clear? Uterus के wall को. Is that clear? Then parturition takes place. Am I right? Now अब इसको देखो. Just recall. Parturition के बाद क्या हुआ? Birth has taken place. ठीक है? And during one thing you write over here also, कि when fetus is formed, जैसे ही fetus form होता है, this is very delicate in nature because it is rearing in mother's womb, so it needs protection. ठीक है? तो इसके प्रोटेक्शन के लिए जो लेयर्स फॉर्म होते हैं ओवर फीटस, दैट इज जर्म लेयर. जर्म लेयर और फीटल मेम्ब्रेन. लिख लेना. इफ द क्वेश्चन आस्क्स व्हाट डू यू मीन बाय जर्म लेयर, राइट हाउ मेनी टाइप्स. तो क्या लिखोगे? The layers formed over the growing fetus to provide its protection. किससे protection चाहिए इसको? Because it is in mother's womb, so it prevents from friction. Am I clear? Now Yes, ma'am. What are the names of fetal membrane? First, you write. If you have not written in the class or maybe absent that time, so you can write here also name. First, chorion. First is spelling correct लिखोगे. Is it all clear? Chorion. Second, amnion. Third, allantois. ये प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं ओवर ग्रोइंग फीटस. ठीक है? तो इसको जर्म लेयर भी कहते हैं, फिटल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं. ठीक है? सो दीज आर द लेयर्स फॉर्म ड्यूरिंग दैट स्टेज, डेवलपमेंटल स्टेज. इज इट ऑल क्लियर? समझ में आया सबको? So this is all about the sexual mode of reproduction. So both type is completed, already revised. Asexual, all the type along with the vegetative propagation in plant, and the next mode of reproduction, sexual. How fusion taking place and how the birth is taking place. Is that clear? Now one very small topic is left, that is family planning. You write down the topic, family planning. And there was a term, contraceptive. Do you know contraceptive?
If you recall, I might have To told you prevent that conception. yeah, certainly, very nice. To prevent conception, it is contraception. ठीक है? So some modes are there. Are you recalling that modes? Again, you can write methods. What are the method? First, Ma'am, oral. oral, very good. Second, Ma'am, chemical. mechanical, दोनों कर लो. Mechanical. Ma'am, chemical. Third, chemical. Ma'am, And surgical. surgical, very nice. Oral, that by taking oral pills. Various types of pills are available. So if oral pill is taken by the female, then it will prevent the fertilization. How it will prevent? When pills are specially meant for the conception is taken, then it delayed the process of ovulation. ठीक है? जब ओवम का फॉर्मेशन डिलेड होगा तो या स्टॉप हो जाएगा फॉर द टाइम, तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन विल बी प्रिवेंटेड. सो दिस इज द मेथड adopted for the conception. Next है mechanical by device. In female, that is the loops are there, metallic loops. Male for condoms. These are the things to prevent the entry of sperm. Certainly, it will prevent the mode of conception. Chemical, by using an ointment named spermatocides, means it will kill the sperm when it is ejaculated. So when sperms are killed, how can it fertilize? Certainly, fertilization will be prevented, and it is the best mode for contraception. Another, surgical. सर्जिकल, ये कभी कभी इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आता है. ठीक है? व्हाट इज द सर्जिकल मेथड फॉर फैमिली प्लानिंग? तो यू डोंट हैव टू राइट ऑल दीज. व्हेन स्पेसिफिक टर्म विल बी रिटन, तो सिर्फ इसी को लिखोगे. ठीक है? सर्जिकल इज टू टाइप, इन मेल एज वेल एज इन फीमेल. मेल में क्या होता है? वैसोटोमी, मीन्स बाइंडिंग द वास डिफरेंस. वास डिफरेंस क्या है? स्पर्म डक्ट. इट विल डू व्हाट? स्पर्म विल बी फॉर्म. वेयर इट इज फॉर्म? टेल मी. वेयर स्पर्म्स आर फॉर्म? से क्विकली. वेयर द स्पर्म्स आर फॉर्म. स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? Tell me the answer. One mark. Where sperms are formed? Testis. Unmute yourself and tell the answer. Where? Testis. So why it is so delayed? जैसे हमने क्वेश्चन थ्रो किया, you should immediately answer it. It is the testis. तो ये वास्ट डिफरेंस का मतलब क्या है? वास्ट डिफरेंस दैट इज स्पर्म डक्ट. व्हाट हैपेंस व्हेन स्पर्म्स आर फॉर्म? इट हैज टू बी कंडक्टेड. तो ये कंडक्टेड कैसे होगा? वास्ट डिफरेंस से. ठीक है? जिसको कहते हैं स्पर्म डक्ट. इज दैट क्लियर? तो ये वास्ट डिफरेंस को बाइंड कर दिया जाता है. ठीक है? और कट भी किया जाता है. सर्टेनली the sperm will be prevented to reach to the ovary. ठीक है? Not ovary, when ovum is released and it is not going to meet with sperm. तो इसको कहते हैं वैसोटोमी. In female,
ट्यूबेक्टोमी मीन्स द प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ पे है? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है? Look. या तो that will be minded. So certainly it will prevent the mode of fertilization, and natural, it is the best source for contraceptive method. Is it all clear? Yes, ma'am. Okay. Now one very small topic that is tagged at the end, that is STD, sexually transmitted disease. ठीक है? So you will do one thing, स्पेशली फंगल, वायरल और बैक्टीरियल, ये 3 सोर्स हैं. तो यू विल एटलीस्ट रिकॉल बाय मेकिंग वन वेरी स्मॉल चार्ट कि वायरल डिजीज क्या है एंड बैक्टीरियल क्या है, फंगल क्या है. ठीक है? एंड जैसे मेल में सिफिलिस, गुनोरिया फीमेल्स में, तो ये जो है दैट इज द थिंग्स टू रिकॉल. इज दैट ऑल क्लियर? ये 2-3 डिजीज को देख लोगे अच्छे से, इट्स नेम एंड प्रॉपर स्पेलिंग with 1 or 2 symptoms and how it would be cured. Am I right? Now one thing you tell me clearly, for the portion exam I have just discussed, reproduction is very important, both mode, asexual and sexual, and before I talked regarding the genetics, heredity, variation. ये क्लियर है सबका? मेंडल्स लॉ, is it all clear to you? Tell me. Time is running fast, so be careful. Is it all clear to you? Or any question you want to ask from there? Heredity, कोई चीज unclear है तो बोलो. I will clear just now. Tell me. Unmute yourself and answer me. If anything is not clear in genetics portion, that contains also the very important part, Mendel's law of inheritance. So should I tell in brief regarding that chapter or start the next chapter? In tomorrow class I will start the next physiological function. जैसे आज हमने रिप्रोडक्शन को क्लियर किया, वैसे tomorrow I think better for excretion. Is that clear? Or any problem in genetics? Tell me. Or should I tell in brief? Tell me. Unmute yourself. Tell in brief. What? Mendel's law? Huh? Yes, ma'am. Okay. ये रिकॉल कर रहे हो कि what was the year 1900 to 1. ठीक है? It was the year when Mendel came on that scene. Or for what? To clarify how the characters, जिसको trait भी कहते हैं, how the characters or trait is transferred to the next generation. What is the reason behind that? So for that matter, he took pea plant for his experiment और उन्होंने 7 characters को pick किया था and took one by one to define his all 3 laws. 3 law याद है सबको ना? Law of dominance and recessiveness, second law of segregation, and third law of independent assortment. तो फाइनली उन्होंने क्या पिक किया? 3 characters. फर्स्ट था लेंथ ऑफ द स्टेम, सेकंड वाज सीड कलर,
नेक्स्ट सीड शेप, ये 3 कैरेक्टर्स को उन्होंने पिक किया फॉर हिज 2 क्रॉस. फर्स्ट monohybrid, that was cross between single pair of contrasting character. लेंथ को उन्होंने पिक किया था, तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या हुआ, 1 टॉल 2nd ड्वार्फ. ठीक है. और उन्होंने शो किया व्हेन ही सॉ कि फर्स्ट जनरेशन में कैसा कैरेक्टर अपीयर हुआ था, ऑल प्लांट्स वेयर टॉल. तो वैसे ही उन्होंने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स 7 कैरेक्टर्स पे एक्सपेरिमेंट किया. तो लास्टली ही टोल्ड व्हाट, कि वॉट एवर कैरेक्टर अपीयर ओनली इन F1 जनरेशन दैट विल बी डोमिनेंट. जैसे T और T था, ये कैरेक्टर अपीयर हुआ तो दिस वाज डोमिनेंट ओवर दिस वन. ठीक है. तो दिस वाज डोमिनेंट and whatever character not appeared only in F1 generation was recessive. ठीक है. So this was law of dominance and recessiveness. Second law, same monohybrid cross was continued, same character, tall and dwarf contrasting character. What he did, F1 generation में ये जो अपीयर हुआ टी एंड टी, तो ही जस्ट डिड व्हाट, सेल्फ क्रॉस्ड. क्यों किया उन्होंने सेल्फ क्रॉस्ड, बाइसेक्सुअल प्लांट था. तो टू गेट द सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही सेपरेटेड आउट दीज 2 एंटिटीज, कैपिटल टी को और स्मॉल टी को. इन दोनों को जब उन्होंने सेपरेट आउट किया and taking as male and female, याद आया, I'm not going to do the same. तो उसको कहते हैं पनेट स्क्वायर टेस्ट. once considering male and female, तो क्या था, 2 type of ratios were appeared, 3:1 it was phenotypic ratio, 1:2:1 it was xenotypic ratio. Am I clear? So these 2 combinations were formed. And the third one, law of independent assortment के लिए 2 character was left, seed color and seed shape. और दूसरा उनका जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था, अब उन्होंने फॉर थर्ड लॉ ही टुक डाई हाइब्रिड. ठीक है. एट पेरेंटल लेवल तुम लोगों ने देखा होगा अगर क्लास अटेंड किए हो सीरियसली, एंड वॉट एवर आई हैड रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड यू हैव नोटेड डाउन. तो व्हाट ही डिड इन डाई हाइब्रिड, दैट वाज क्रॉस बिटवीन 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. एक क्या था, येलो, और दूसरा था ग्रीन. सीड कलर में 1 was yellow, 2nd was green, small t. ये रिसेसिव कैरेक्टर था, इसलिए ये स्मॉल से था, ये डोमिनेंट था. शेप के लिए उन्होंने क्या किया, राउंड एंड रिंकल. एक शेप क्या था सीड का, राउंड था, दूसरा था रिंकल. तो नेचुरल है, हमने 1 लेटर लिखा है, बट क्या होना चाहिए, 2y. वाई क्यों होना चाहिए, आई हैव टोल्ड ऑलरेडी, टू एक्सप्रेस एनी कैरेक्टर देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ जीन इन पेयर्स एट देयर लोकाई. तो व्हेन गैमेट्स फॉर्म हुआ तो कितने कॉम्बिनेशंस बने थे उसमें, ऑल ओवर 16. 2 to the power n हमने बताया था ना, 4 heterozygous gametes form. So ultimately
Hello. Ultimately, 2 to the power n, n is number of heterozygous gamete. कितने gametes बने थे यहाँ डाइहाइब्रिड के लिए? 4. So 2 to the power 4, 16 combinations were formed. और उन्होंने क्या कहा था? All assorted out independently. Means this shows what? Seed color is always independent of seed shape. Is it all clear? This was the gist of all the Mendel's law. Is it all clear? बहुत important है, 5 marks का. हमने पहले भी कह चुका है कि ये that is law of independent assortment will be asked for 5 marks. Be prepared. And for 3 marks it may come the law of dominance and recessiveness. You will make that flow chart and you will write. Is it all clear? Tell me. Don't waste time, beta. Tell me anything unclear, any query you have, because tomorrow I'm going to start the excretion and the part of respiration also. Is that all clear? Tell me. And you will do one thing. You will search all that question from heredity that is given at the back of the chapter and at least take 2 to 3 questions and try to write yourself. Don't copy from copies or any book. Is that clear? So we will meeting at the same time in tomorrow class. Till then you revise all. Whatever the thing has been discussed, revised twice or thrice time, I think that should be clear to you. If not, in tomorrow class, first of all, you ask, you note down when you read, and as soon as the class started, you ask कि क्या क्या problem है. Still any query? Or should I consider it is all 100% clear? Unmute yourself and ask. No problem? Then tomorrow we will meet at the same time and the chapter will be, for revision, it will be excretion, and then to some part, the important part like internal respiration. Is that clear?